नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर होता है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का जो टेस्ट पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसमें आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसमें देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कॉमर्स, टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, मैक्सिमम पास मार्क्स 50। तो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स का। नोट है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन पेपर से आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का होता है, ताकि कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर संख्याओं का माध्य 15 और हरात्मक माध्य 9 है तो उनका समांतर माध्य होगा। तो आंसर है 25। इफ जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 15 and 9, the arithmetic mean will be, so answer would be 25। न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र है YC इज इक्वल टू A प्लस BX। नेक्स्ट में आप बाकी देख सकते हैं, कॉल पियर्सन रीति का प्रतिपादन हुआ था। आंसर कुछ नहीं है। तो 1892, ठीक है। कॉल पियर्सन मैथड propounded इन 1892, है ना। कॉल पियर्सन एक प्रसिद्ध थे, इसमें तो कोई नहीं है, वो गणितज्ञ थे, स्टैटिस्टिशियन। एक महिला की सुंदरता निम्न प्रकार का मापन है, परिशुद्ध मापन। ब्यूटी ऑफ ए लेडी इज फॉलोइंग टाइप ऑफ मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। नेक्स्ट है, विवरण मापांक मापता है संगति, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स दी कंसिस्टेंसी। फिर बाकी है इस तरह से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। माध्य के लिए विचलनों का गणितीय योग। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। SD standard deviation is equal to 4/5 mean deviation। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। If standard deviation is 5 and mean is 50, then what is the value of COV? And that is 10। Mean of dispersion or which series? वर्तमान वर्ष का आधारांतिक सूचकांक फिशर विधि। इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन करंट ईयर, दैट इज सन फिशर मेथड। Ball and bat is example of which demand? Complementary demand। The theory of motivation of X and Y introduced by MC Gregor। A.H. Maslow was a resident of American। Employment theories are related to macroeconomics। Number of reserve industries for PSU in present are 2। Production function is sources of production। Present bank rate is 4%। And CRR, cash reserve ratio, 3%। Banking Lokpal scheme was started 1995। Banking Regulating Act passed in 17th Feb 1949। Forms of organizational structure is 7। Word analysis method। Packaging cost is distribution cost। Fact cost plus contract is useful to both। Loss of incomplete contracts is transferred to profit and loss account।
बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और कुछ मैं पढ़ता हूँ, ये आप देख सकते हैं ताकि जल्दी हो। फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज एप्ले। कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। The center point of cost audit is factory. फयोल का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ फयोल, एफ फॉर फयोल, एफ फॉर फ्रांस, सो फ्रांस। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है ना, मैग्नीफाइज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ हाई सेल्स। Which of the following is included in corporation? A company incorporated outside India. A company is statutory association for profit. Theory of Pranic is 14. Primary functions of management process as per Henry Fayol is 4. And dividend can be declared out of earlier year reserve. Net investment in replacement project means cost of asset less residual values of old asset. बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। Solomon Isra has called cost of capital as, that is, cut off rate of capital expenditure. High cost of capital is evidence of all of the above. Leverage means effectiveness. Which section of Companies Act regulates the dividend distribution? Section 74-74. Accounting period is called in income tax, that's previous year. The following is not heads of income, that is income from interest. Company may be resident or non-resident. Income of resident, the following is taxable, all of the above. Not taxable for non-residents is foreign income. Regular pension is taxable for government and private both employee. Income included in the assessee's total income is self-ownership house. Income from house for self-business is nil. Which whose property income is not charged to tax? All of the above. Permanent account number is allotted by income tax department, that is known as a PAN. Number of digit in PAN are 10, in that 5 are in digit, 5 are in alphabet, then 4 in digit, and again last one in alphabet. Which is not a feature of GST? No set of tax paid on earlier stage. The implemented in India, that is dual GST. MP GST Act is 2017. Method adopted in India for GST calculating, that is tax credit method. Amount of GST in invoice compulsory to show. Implementation of GST in beneficial in long term.
Central rate of GST is divided between CGST and central GST and state GST, that is equally. Section regulating time of supply of good is 12, where a sale will not be regarded as interstate supply. All of the above. Section of notify exempted exercise book goods under GST, that is 11. Condition to input tax rebate goods purchased from registered person. Input tax credit is not available in case of composition. Input tax credit is allowed for all of the above. Rate of input tax credit regarding input 100%. Condition for ITC above all of the above. Accounting standards in India are issued by Institute of Chartered Accountants of India. Accounting standard ensures the financial statements, all of the above. Which accounting standard relates to intangible assets, AS 26? Which accounting standard relates to depreciation, is none of the above. Non-profit institution prepare profit and loss account. Income and expenditure account is prepared by non-profit institution. And income and expenditure account shows surplus and deficiency. Legacies should be treated as a revenue receipt. Payment of honorarium of secretary is treated as revenue expenditure. The rate of interest or dividend is not fixed on equity shares. Meaning of X interest price of investment is market price and interest. On the dissolution of a firm, cash in hand is transferred to cash account. Profit or loss or realization account is transferred to कैपिटल अकाउंट ऑफ दी पार्टनर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे, तो आप एक बार इनका चेक कर सकते हैं ताकि आप एक जनरल आइडिया ले पाएँ। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।